Good morning, students. Yesterday, we discussed how to create a program in basic, and we created one program in design window. We added three labels: label one, label two, label three, and applied different properties. तो लेबल की जो हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की थी, दैट इज नंबर वन इज टेक्स्ट. तो हमने टेक्स्ट में कर दिया फर्स्ट नंबर, देन second number and sum. And in order to set the background color and background image, the properties are back color and background image. Okay. और अगर आपने इसका साइज चेंज करना है फॉन्ट का, the property is font property. हमने जो प्रॉपर्टीज यूज की थी टेक्स्ट बॉक्स की, these properties are number one, text. Okay, so here we change the text like first number, second number. Okay, and then font tag to increase font size and change font style. Okay, and then we apply font back color. ठीक है, to change the background color and background image. ये हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की थी. और अगर हमने अगर हमने बैकग्राउंड सेट करनी है उसकी फॉर्म की, अदरवाइज इन केस यू आर वांट टू चेंज सेट इमेज एज ए बैकग्राउंड इन द टेक्स्ट बॉक्स, तो देयर इज ए इमेज प्रॉपर्टी. क्लियर? और हमने जो फॉर्म के ऊपर अप्लाई किया था, फॉर्म के ऊपर प्रॉपर्टीज, दीज आर टेक्स्ट. तो टेक्स्ट हमने किया था ऐड टू नंबर्स, देन बैकग्राउंड image to change the set as a image as a background. ठीक है, और then we inserted three text boxes. Okay, then text box 1, text box 2, text box 3. तो इसकी जो प्रॉपर्टी हमने चेंज की थी, that is back color. Second one is font in order to change the font size and style. Then we inserted one button. In button we change the text property. After applying this, we double click on the sum total and type the coding. तो मैं यहाँ पे कोडिंग लिख रहा हूँ. कोडिंग हमने कैसे टाइप की थी, जहां पे भी कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहां पे हमने कोडिंग टाइप की. dim total as integer. तो हमने क्या किया, एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, एक हमने वेरिएबल लिया इंटीजर, एंड देन इंटीजर टाइप दैट वेरिएबल नेम इज टोटल. टोटल इज इक्वल टू, हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 का जो टेक्स्ट है उसको वैल्यू में कन्वर्ट किया, टेक्स्ट बॉक्स 2 का जो टेक्स्ट है उसको वैल्यू में कन्वर्ट किया, नंबर में कन्वर्ट किया. अदरवाइज दीज आर स्ट्रिंग. स्ट्रिंग को अगर आप ऐड करते हो तो कंकैटिनेशन होता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दूं 10, यहाँ पे 20, तो रिजल्ट आ जाएगा 10
20, not a 30. Okay, so concatenate will plus symbol will add to strings, पर जब आप इसको वैल्यू में कन्वर्ट करोगे तो ये नंबर की तरह ट्रीट होंगे, तो आंसर विल बी 30. तो उसके बाद हमने टेक्स्ट बॉक्स 3 में हमने टेक्स्ट इंसर्ट कर दिया. कौन सा इंसर्ट कर दिया? टोटल. ओके स्टूडेंट्स, टेल मी, कोडिंग इज क्लियर? अनमोल, बेटा अनम्यूट Yes, योरसेल्फ. sir. कोई भी इसमें डाउट? Yeah. Yeah, clear, sir. अनवे, अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, sir. So why we use val function? वो सर नहीं तो इंटीजर वैल्यू नहीं लेगा, वो स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा इसे. हाँ, ये इसको करके देखते हैं. ठीक है, इसको करके देखते हैं. वी आर रिमूविंग द val function. ओके, तो व्हाट हैपन, देखो इधर. I enter 10, 20. Click on sum total. Answer is 10, 20. ये concatenate हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है. ठीक है, कंसेप्ट इज क्लियर? बानी, इट्स क्लियर बेटा? Yes, sir. सो आपने जब भी न्यूमेरिक वैल्यू में कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो यू विल हैव टू यूज वैल फंक्शन इन ऑर्डर टू अप्लाई दी in order to apply calculations. तो आई एम यूजिंग वैल. ब्रैकेट में क्या लेना है आपने? टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट एंड बिफोर टेक्स्ट बॉक्स 2 अगेन यूज वैल. नाउ इट इज वर्किंग. अब ये दोनों को ऐड करेगा. आंसर इज 30. अब एक हम और छोटे से प्रोग्राम बना रहे हैं. वी आर गोइंग टू क्रिएट वन मोर प्रोग्राम. वी आर getting program to input marks in 5 subjects and display total marks. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू क्रिएट दैट. मैं बिगिनिंग से बता रहा हूं. अगेन आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट. विंडो फॉर्म एप्लीकेशन. So here is a empty form. Clear? If you want to make any changes in the form, select the form. Properties will be displayed in a property window. First, I am going to change the background image. For this, for text में मैंने in place of form 1 I type total marks. Okay, then after that, in background image, click on project resource file और resource context, दोनों में से कुछ भी दे सकते हो. Click on import button. Take any image of your choice.
and then click on OK button. Next is go to your toolbox, insert, because we are going to add total of 5 subjects. So I need 5 labels for subjects and 1 label for total marks. Okay, तो यहाँ में मैं 5 labels दे रहा हूँ. One, 2, 3, 4, and 5. Now select the label 1. The property of label 1 will be displayed. Click on font to increase its size. And text, in order to change the text in place of label 1. First, here subject name is science. I click on second label, text in place of label 2, mass. And from font, take size 18. Label 3, text English. And from font property, size 18. The next is font property, size you will take 18. And in a text property in label 4, take so it is SST, and then click on label 5 because we are going to add 5 numbers. Here is computer. Sorry. And font. So these are 5 subjects. Now one more text box for sum. So I am going to insert one more label. I change its size. Clicking on font and 18. Now here I type total marks from label 6, total marks, and now I'm going to insert 5 text boxes in order to get input from user. So here is text box 1, 2, 4, 5. Now click on text box 1.
take the text as take the font property. Font is 18. Text box 2, font is 18. Okay, you will change because otherwise text size is very less, will be very less. Okay. After that, insert one more text box for total marks. And take the size 18, font size 18. Now insert one button. Now change the properties in button 1. I am going to take text as sum, and then font property in order to change its size. You can also insert image by using image property. Resize your button. So I am inserting button here. Now for coding, double click on sum. Cursor will blink here. Now take one variable dim, total as integer, press enter key. Now take total equal to val to convert your value into string value into text. अब इसमें लोगे text box 1 dot text bracket close plus where text box 2 dot text plus val text box 3 dot text plus val text box 4 dot text. Then plus val text box 5 dot text. After that, type here text box 6
dot text is equal to total. Now click on start debugging button. So in science, I enter 56. Then click on sum button. Total is 396. So this is your complete Visual Basic program. Avni, any doubt in this? No, sir. ओके नाउ अगर आपने यहाँ पे एवरेज भी डिस्प्ले करनी है तो मैं आपको चेंजेस बता रहा हूँ कैसे एवरेज डिस्प्ले करनी है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करो, लेबल, एंड हियर इज इन प्रॉपर्टी take label text as average and change its size by using font property and insert one text box. And again change its size and come to your coding window. Here type text box 7 dot text is equal to total, that is the variable, divide by 5. Again execute this. So here is a total marks and the average. So I am copying this coding. Coding is this is your coding portion. Bani, clear? Yes, sir. Okay, but I note down this coding. Yes, Anved. जो टेक्स्ट बॉक्स 7 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू टोटल बाय 5, तो Yes. टोटल बाय 5 पे तो नहीं वैल प्रॉपर्टी लगाएंगे? नहीं बेटा, क्योंकि हमने सम के ऊपर, हमने सम बटन के ऊपर लगाई है ना प्रॉपर्टी, तो एक कर्सर उसके ऊपर डबल क्लिक किया तो उसके बाद जैसे ही हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो टोटल भी आ जाएगा, एवरेज भी आ जाएगा। अगर आपने एवरेज अलग लेके आना चाहते हो तो फिर आपको एक और बटन इंसर्ट करना पड़ेगा। ओके सर। Now next is
how to execute your project, your form को आपने कैसे execute करना है? बेटा, there are different methods. First method, in toolbar start debugging button. ठीक है, toolbar में एक start debugging button आएगा. Here is in a toolbar. कौन सा बटन है? Start debugging button. Next is press, second method, press F5. It is a shortcut key. Next one is in debug menu, start debugging. So here is third method is debug menu, start debugging option. So note down 3 methods to run or execute the program of Visual Basic. So note down, beta. Quickly note down. Yes, quickly beta, note down the options. Now next is there is a one short form for this you will have to write down full form, that is PHP. It is a open source जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है वेब पेज क्रिएट करने के लिए. ठीक है, PHP स्टैंड फॉर PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर. ठीक है, PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर. इट इज ए widely used scripting language for creating web pages. So its full form is PHP hypertext preprocessor. So here in a full form, we are using also short form. So P stand for PHP, H stand for hypertext, P stand for preprocessor. Next is Visual Basic is the we are using Visual Basic. It is a largest using programming language, but there are also other programming language. This is Microsoft programming language, means introduced by Microsoft. These are C sharp, not say C hash. It is C sharp, C++, F sharp, JavaScript,
Python is a open source. Clear? JavaScript Python here is a open source. तो जब आप विजुअल बेसिक स्टूडियो यूज करते हो, विजुअल स्टूडियो, these languages are part of Visual Studio. These are C#, C++, F#, JavaScript, and Python. These are the part of Visual Studio. Otherwise, Python is a open source here. Navroop, it is clear? Yes, sir. Okay, beta. Another is Visual Basic Net. Visual Basic .net. Beta, it is a evaluation of Visual Basic Language, VB. Okay, and its target is to create window, web, and mobile applications. Otherwise, in a VB, we can create only window applications, but in the case of your Visual Basic .net, we can create window, web, and mobile applications. Okay, students, time is over. Now I am going to close the meeting. Tomorrow we will again continue Visual Basic.